हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी आगामी होने वाली सीबीआई, एपीपी और पीपी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम 2007 एपीपी पेपर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने 50 तक के क्वेश्चनों को करवा दिया था और आज के इस वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको सीबीआई, एपीपी 2015 और 2017 के पेपर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो 50 तक हमने करवा दिया था पिछले वीडियो में और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर AP टाउन न्यूसेंस एक्ट 1889, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ऑप्शन ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट ए पर्सन कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विदाउट ए वारंट। ऑप्शन बी, ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन कमिटिंग सर्टेन ऑफेंसेस ओनली विदाउट ए वारंट। ऑप्शन सी, ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन कमिटिंग एनी ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस एक्ट। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन कमिटिंग एनी ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस एक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, which if any of the following does not fall under the definition of public servant as per the Prevention of Corruption Act 1988? Option A, Judge of the Supreme Court. Option B, Depot Manager of APSRTC. Option C, Chief Secretary to Government. Option D, all the above fall under the definition of public servant. And correct option number C, Chief Secretary to Government. Next question number 53, which of the provision of CRPC which allows a witness being examined by a police officer not to answer questions, answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge? ऑप्शन ए सेक्शन 159, ऑप्शन बी सेक्शन 160, ऑप्शन सी सेक्शन 161, ऑप्शन डी सेक्शन 162। एंड करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 161। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इन्वेस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, what punishment if any is A liable for? Option A, not liable for any punishment. Option B, imprisonment for life. Option C, imprisonment for a term which may extend to 7 years. And option D, none of the above. And correct option number C, imprisonment for a term which may extend to 7 years. Next question 55, which of the following accused would you link to offences under section 256 to 260 IPC? Option A, Charles Sobraj. Option B, Telgi. Option C, accused in Nithari killings. Option D, none of the above. And correct option number B, Telgi. फिर next question 56, the legal metrology department mainly deals with the offenses in of the IPC. Option A, chapter 11. Option B, chapter 12. Option C, chapter 13. And option D, chapter 14. And correct option number C, chapter 13. फिर next question 57, section of 124 IPC deals with the offense of assaulting. Option A, governor of a state. Option B, chief minister of a state. And option C,
any minister of a state, and option D, none of the above. And correct option number A, गवर्नर ऑफ द स्टेट, करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट डीम्ड टू बी फिट टू बी डिक्लेयर एज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया बाय द CRPC itself? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, एंड ऑप्शन डी अहमदाबाद। एंड करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट designated as a grievous hurt? ऑप्शन ए emasculation, ऑप्शन बी permanent disfiguration of the face, option C any hurt which cause the sufferer to be in severe bodily pain for 15 days, and option D dislocation of tooth. And correct option number C, any hurt which causes the sufferer to be in severe bodily pain for 15 days. Next question, what is the maximum punishment which can be imposed on conviction for any of the offences under the AP Town Nuisance Act 1889? option A ₹50 fine and 1 month RI, option B ₹1000 fine and 6 months RI, option C ₹5000 fine and 1 year RI, and option D ₹1000 fine and 1 year RI. And correct option number A, ₹50 fine and 1 month RI. Next question 61, who among the following is not designated as a grievous hurt? ऑप्शन ए पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी वोमैन, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट, एंड ऑप्शन डी सोशल वर्कर। एंड करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, कैटल अंडर AP Forest Act 1967 includes option A elephants, option B pigs, option C cows, and option D all the above. And correct option number D, all the above. Next question 63, foreman has been given certain responsibilities under option A Factories Act 1948, option B Andhra Pradesh Chit Fund Act 1971, option C Hyderabad City Police Act 1348, and option D Andhra Pradesh Telangana Area District Police Act 1329. And correct option number B, Andhra Pradesh Chit Fund Act 1971. The next question 64, which of the following agencies is not exempted from Right to Information Act 2005 under section 24 of the Act? Option A Border Security Force, option B Supreme Court, option C Intelligence Bureau, and option D Assam Rifles. And correct option number B, Supreme Court. Next question number 65, if a person is convicted a second time under section 3 or 4 of the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, the maximum punishment he can be awarded is option A 5-year imprisonment and fine of ₹1 lakh, option B 4-year imprisonment and fine of ₹50,000, option C 1 year imprisonment and fine of ₹25,000, and option D 6 months imprisonment and fine of ₹2,000. And correct option number A 5 years imprisonment and fine of ₹1 lakh. Next question 66, the concept of plea bargaining
was introduced in the criminal administration of justice in India through option A Criminal Law Amendment Act 2006, option B Criminal Law Amendment Act 1983, option C Criminal Law Amendment Act 1993, option D Criminal Law Amendment Act 2005. And correct option number D Criminal Law Amendment Act 2005. Next question. The definition of child under the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 is option A person who has not completed 12 years of age, a person who attained 12 years of age, a person who has not completed 14 years of age, and last option D, a person who has completed 16 years of age and is below 18 years of age. And correct option number C, a person who has not completed 14 years of age. फिर next question 68. Any person aggrieved by an order passed by any officer other than the commissioner or district collector under AP Excise Act 1968 may appeal to the deputy commissioner. Option A within 15 days from the date of communication of the order. Option B within 30 days from the date of communication of the order. Option C within 40 days from the date of communication of the order, and option D within 45 days from the date of communication of the order. And the correct option number D, within 45 days from the date of communication of the order. The next question 69. Which of the following is not a requisite of a promissory note? Option A, the promise to pay as unconditional. Option B, the sum payable must be certain. Option C, the signature of the maker, and option D, the attestation of witnesses. And correct option number D, the attestation of witnesses. Next question number 70. The Andhra Pradesh Pawn Brokers Act was passed in the year option A 2001, option B 2002, option C 2003, and option D 2005. And correct option number B 2002. Next question 71. You would associate Mathura case with the offences relating to option A environmental pollution, option B wounding of religious feelings, option C rape, and option D none of the above. And correct option number C rape. Next question 72. Which of these offences are compoundable without the permission of the court? Option A section 402, option B section 404, option C section 406, and option D section 407. And correct option number D, section 407. Next question number 73. Which of these offences are compoundable without the permission of the court? Option A section 345 IPC, option B section 335 IPC, and option C section 354 IPC, option D none of the above. And correct option number B, section 335 IPC. Next question 74. Who can make a reference to the High Court under section 395 CRPC? Option A President of India, option B Government of a state,
ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दैट हाई कोर्ट. एंड करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दैट हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वारंट केस मीन्स. ऑप्शन ए all cases relating to an offence punishable with death or imprisonment for life. Option B all cases relating to an offence punishable with death or imprisonment exceeding 7 years. Option C all cases relating to an offence punishable with death or imprisonment for a term exceeding 2 years. And option D none of the above. And correct option option number C all cases relating to an offence punishable with death or imprisonment for a term exceeding 2 years. फिर next question 76 you should associate that word service providers with which act. Option A the Information Technology Act 2000. Option B the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. Option C Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. The Right to Information Act 2005. And correct option option number C Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Next question 77 what if any role does the state legislature have in an exercise to form a new state by separation of territory from that state. Option A it has no role. Option B its view have to be sought before introducing a bill in parliament. And option C the consent of the state legislature is mandatory before introducing a bill in parliament. And ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 77 का बी इट्स व्यू हैव टू बी साउट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल इन पार्लियामेंट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 78 whoever threatens any persons with any injury to his person, reputation or property with intent to cause that person to give false evidence commits an offence under option A section 192A IPC, option B section 194A IPC, option C section 195A IPC, and option D section 196A IPC. And correct option option number C section 195A IPC. Next question 79 the Protection of Civil Rights Act 1955 basically intends to ensure that the rights accrued due to of the Constitution of are respected and enjoyed. Option A Article 17, option B Article 18, option C Article 19, and option D none of the above. And correct option option number A Article 17. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 80 which of these laws do not have a provisions for enhanced punishment for subsequent conviction under some of the provisions in that law. Option A AP Gaming Act 1974, option B SC and ST Prevention and Atrocities Act 1989, option C Protection of Civil Rights Act 1955, and option D none of the above. And correct option option number A AP Gaming Act 1974. और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर द SC and ST Prevention and Atrocities Act 1989
shall be investigated only by option A police officer in the CID, option B, a police officer not below the rank of a deputy superintendent of police, option C, a police officer specially empowered in this regard by government, and option D, all the above. And correct option number B, a police officer not below the rank of a deputy superintendent of police. Next, question number 82. Which of the following statement is not true in relation to the Right to the Information Act 2005? Option A. No court shall entertain any suit application or other proceedings in respect of any order made under this Act. Option B. The Act is not applicable to the Central Reserve Police Force. Option C. Wherever there are inconsistencies between this Act and the Official Secrets Act 1923, the provisions of the RTI Act shall prevail. And लास्ट ऑप्शन, द एक्ट हैज 3 शेड्यूल्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, द एक्ट हैज 3 शेड्यूल्स, ये आपका सही है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83. What are the qualifications required for being appointed as presiding officers of a cyber appellate tribunal under the Information Technology Act 2000? Option A, is or has been a member of the Indian Legal Service and is holding or has held a post in grade 1 of that service for at least 3 years. Option B, is or has been or is qualified to be a judge of a high court. Option C, both A and B above. And D option, either A or B above. And correct option number B, is or has been or is qualified to be a judge of high court. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. अगला क्वेश्चन है 84. Which is the agency which as per the act has a vital role to play in the operation of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? Option A, officials of Women and Child Welfare Department. Option B, officials of Social Welfare Department. Option C, protection officers. And option D, all of the above. And correct option number C, protection officers. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 85. अंडर दोज सर्कमस्टेंस कैन द गवर्नमेंट पास एन एड इंटरिम ऑर्डर attaching the money or other property of a financial establishment or the promoter under section 3 of AP Protection of Depositors of Financial Establishment Act 1999. तो पहला ऑप्शन है आपका, upon complaints received from depositors that the financial establishment has defaulted or is likely to default in the return of depositors after money. And option B, where government has reason to believe that the financial establishment is acting in a manner prejudicial to the interest of the depositors with an intention to defraud them. Option C, where government is satisfied that the financial establishment is not likely to return the deposits after maturity. And last option, all of the above. एंड करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 85 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो इसमें आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा. पहले ऑप्शन ए का थोड़ा सा इधर है, तो ये आपका ऑप्शन ए भी सही है. फिर आपका यहाँ पे है ऑप्शन बी और सी, ये सब सही है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव. फिर अगला क्वेश्चन है 86. X, while doing a lawful act with proper care and caution, accidentally caused the death of A. What is the provisions of IPC under which X can seek protection? Option A, Section 79. Option B, Section 80. Option C, Section 81. And option D, Section 82. And correct option number B, Section 80.
ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, वेयर एन अक्यूज्ड फेसिंग ट्रायल इन ए सेशन केस डज नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स टू engage a pleader to defend himself under what provision of the CRPC does the court assign a pleader to defend him? Option A, section 303 CRPC. Option B, section 304 CRPC. Option C, section 305 CRPC. And option D, section 306 CRPC. तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 304 CRPC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, विच इज द केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन एग्जॉस्टिव इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट? ऑप्शन ए, इंदिरा सावने केस। ऑप्शन बी, DP यादव केस। ऑप्शन सी, DK बासु केस। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। एंड करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, DK बासु केस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, विच इज द प्रोविजंस ऑफ CRPC विच बार्स अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन इन सर्टेन पेटी केसेस? ऑप्शन ए, सेक्शन 374। ऑप्शन बी, सेक्शन 375। एंड ऑप्शन सी, सेक्शन 376। एंड ऑप्शन डी, सेक्शन 377। तो आपका 89 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 376। ये आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा इधर है, विच इज द प्रोविजंस ऑफ CRPC विच बार्स अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन इन द सर्टेन पेटी केसेस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 376। ये आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन US 468 CRPC फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ ए टर्म एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 years इज? ऑप्शन ए 1 year, ऑप्शन बी 2 years, ऑप्शन सी 3 years एंड ऑप्शन डी देयर इज नो लिमिटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 years। ऑप्शन सी 3 years। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ए पर्सन हु इंटेंशनली गिव्स false evidence in any stage of a judicial proceedings or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceedings shall be punished with imprisonment which may extend to option A 2 years, option B 3 years, option C ये आप लोग यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी और सी दोनों में 3 years कर दिया है, तो आपका डी ऑप्शन दिया है 10 years। तो आपका हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग थोड़ा छोड़ दीजिएगा इसको, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि बी और सी दोनों में 3 years ऑप्शन दिया है, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, व्हेन कैन ए कोर्ट नॉट परमिट लीडिंग क्वेश्चंस? ऑप्शन ए, when the questions pertains to matters which are already sufficiently proved. Option B, when the questions pertains to matters which are undisputed. Option C, when the questions pertains to matter which are introductory. And option D, none of the above. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, when the questions pertain to matters which are undisputed। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ए फॉरेनर कमिट्स एन एक्ट ऑन बोर्ड एन इंडियन शिप ऑन द हाई सीज विच अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर द IPC बट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन हिज ओन कंट्री। ऑप्शन ए, ही कैन नॉट बी ट्राइड इन इंडिया फॉर एन ऑफेंस अंडर द IPC। ऑप्शन बी, he can be tried in India for an offence under the IPC. Option C, he can be tried only in his own country. And option D, none of the above। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, he can be tried in India for an
offense under the IPC. Next question 94. The doctrine of estoppel applies to option A civil proceedings only, and option B civil and criminal proceeding only, and option C criminal proceedings only, and option D none of the above. तो 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए. द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल अप्लाइज टू ऑप्शन ए सिविल प्रोसीडिंग्स ओनली. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 95. In which years was the Andhra Pradesh Gaming Act enacted? Option A 1972, option B 1973, option C 1974 and option D 1975. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96. What is the minimum punishment for demanding of dowry under the Dowry Prohibition Act 1961? Option A 1 month, option B 2 months, option C 4 months and option D 6 months. And correct option number D 6 months. फिर next question 97. Who shall be appointed as a justice of the peace under the Andhra Area District Police Act 1859? Option A Director General, option B Deputy Inspector General of Police, option C Superintendent of Police and option D none of the above. And correct option number A Director General. फिर next question 98. A confession which is otherwise relevant but has been obtained in consequences of a deception practiced on the accused for obtaining such confession. Option A is not admissible in evidence. Option B is admissible in evidence. Option C is hit by S24 of Evidence Act and option D none of the above. And correct option number B is admissible in evidence. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 99. Surgeon who performs a complicated surgery on X with the consent of X, knowing that it is likely to cause the death of X but intending in good faith to benefit X, would the case of death of X as protected by option A section 87 IPC, option B section 88 IPC, option C section 89 IPC and option D none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 88 IPC. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 100. What are the ways in which the credit of a witness may be impeached? Option A by evidence of a person that the witness is unworthy of credit. Option B by proof that the witness has been bribed or received any other corrupt inducement. Option C by former statements inconsistent with the present evidence and option D all the above. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो ये आपका पूरा 2007 का पूरा पेपर ख़त्म हो गया दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. धन्यवाद.